जय सद्गुरुदेव जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली। कर्म योग निष्ठा। वर्ण, आश्रम, स्वभाव, व्यवसाय और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य को जिन कर्मों का शास्त्र में विधान है, जिनका अनुष्ठान करना मनुष्य के लिए आवश्यक कर्तव्य माना गया है, उन शास्त्र विहित स्वाभाविक कर्मों का न्यायपूर्वक अपना कर्तव्य समझकर अनुष्ठान करना, उन कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके प्रत्येक कर्म की सिद्धि और असिद्धि में तथा उसके फल में सदा ही सम रहना एवं इंद्रियों के भोगों और कर्मों में आसक्त न होकर समस्त संकल्पों का त्याग करके योगारूढ़ हो जाना, यह कर्म योग की निष्ठा है। परमेश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सबके सुहृद और सबके प्रेरक समझकर और अपने को सर्वथा उनके अधीन मानकर समस्त कर्म और उनका फल भगवान को समर्पण करना, उनकी आज्ञा प्रेरणा के अनुसार उनकी पूजा समझकर अपना कर्तव्य पालन करना, उन कर्मों में या उनके फल में तनिक भी ममता, आसक्ति या कामना न रखना, भगवान के प्रत्येक विधान में सदा ही संतुष्ट रहना तथा निरंतर उनके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना, यह भक्ति प्रधान कर्म योग की निष्ठा है। उपरोक्त कर्मयोग की स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष में राग, द्वेष और काम, क्रोध आदि अवगुणों का सर्वथा अभाव होकर उसकी सब में समता हो जाती है, क्योंकि वह सबके हृदय में अपने स्वामी को स्थित देखता है और संपूर्ण जगत को भगवान का ही स्वरूप समझता है और अंत में भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। कर्म योग निष्ठा is the steadfastness in performing one's prescribed duties as ordained by the scriptures in accordance with one's varna, social order, ashrama, stage of life, nature, occupation, and circumstances. It involves performing these duties with a sense of duty, without attachment or desire for the fruits of one's actions, and remaining equipoised in success or failure. It also involves renouncing all sankalpas, thoughts, and desires, and becoming one with the ultimate reality. Another aspect of Karma Yoga Nishtha is to dedicate all actions and their fruits to the Supreme Lord, who is all powerful, all supporting, and all pervading, and to consider oneself completely surrendered to Him. It involves performing one's duty as a form of worship without any attachment or desire for the fruits of one's actions and remaining always content with the Lord's will. It also involves constantly contemplating the Lord's name, qualities, and form. A person who has attained the state of Karma Yoga Nishtha is completely free from attachment, aversion, and other negative qualities and has developed equanimity towards all. They see their Lord in every heart and consider the entire universe as the Lord's manifestation, ultimately attaining union with the Lord. Om. నా సద్గురు సందేశము కర్మయోగ నిష్ట వర్ణము, ఆశ్రమము, స్వభావము, వృత్తి పరిస్థితులను అనుసరించి ఏ మనుషులు ఏ కర్మలు చేయాలనేది శాస్త్రముల్లో వివరించబడి ఉన్నదో వాటిని అనుష్ఠించుట మానవులకు తప్పనిసరి అయిన కర్తవ్యమై ఉన్నది. ఆ శాస్త్రవిహిత స్వాభావిక కర్మలను న్యాయపూర్వకంగా తన కర్తవ్యంగా భావించి అనుష్ఠించుట, ఆ కర్మలందు వాటి ఫలితమందు మమత, ఆసక్తి, కోరిక శాశ్వతంగా త్యజించి ప్రతి కర్మను అది సిద్ధించినా సిద్ధించకపోయినా వాటి ఫలితమందు సర్వదా సమభావంతో ఉంటూ ఇంద్రియ భోగ కర్మలందు అనాసక్తిని కలిగి సమస్త సంకల్పములను త్యజించి యోగారూఢుడు కావలను. ఇదే కర్మయోగ నిష్ట. పరమాత్మని సర్వశక్తిమంతునిగా, సర్వాధికారిగా, సర్వవ్యాపిగా, అందరికన్నా సహృదయం గలవానిగా మరియు అందరికీ ప్రేరణ కలిగించువానిగా అర్థం చేసుకుని తనను నిరంతరము ఆ పరమాత్మని ఆధీనుడిగా తలుచుకొని
సమస్త కర్మలను, వాటి ఫలితములను భగవదర్పణం చేస్తూ, ఆ పరమాత్ముని ఆజ్ఞ, ప్రేరణలకు అనుగుణంగా ఉండుటయే పూజ అని అర్థం చేసుకొని, తన కర్తవ్యమును నెరవేర్చుకొనుచు, కర్మల యందు గాని, వాటి ఫలితమందు గాని, కించిన్ మాత్రపు మమత గాని, ఆసక్తి గాని, కోరిక గాని లేకుండా, ఆ పరమాత్ముని ప్రతి శాసనమునందు నిరంతరము సంతుష్టునిగా ఉంటూ, నిరంతరము ఆ పరమాత్ముని నామగుణ ప్రభావములను, ఆయన యొక్క స్వరూపమును చింతన చేస్తూ ఉండడమే భక్తి ప్రధానమైన కర్మయోగ నిష్టగా తెలియబడుతున్నది. పై తెలియజేయబడిన కర్మయోగ స్థితిని పొందిన పురుషుని యందు రాగము, ద్వేషము, కామము, క్రోధము మొదలైన అవగుణములు శాశ్వతంగా నశించును. అతనికి అన్నిటి యందు సమభావము కలుగును. ఎందుకనగా వారు అందరి హృదయములందు తన ఇష్టదేవును గాంచుటే కాక, ఈ సంపూర్ణ జగత్తంతా పరమాత్మ స్వరూపంగా తెలుసుకుని అంత్యమున భగవత్ ప్రాప్తిని పొందెదరు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు. నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. കർമ്മയോഗനിഷ്ഠ. വർണ്ണം, ആശ്രമം, സ്വഭാവം, വ്യവസായം, പ്രകൃതി എന്നിവ അനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ ജോലി ശാസ്ത്രബുദ്ധി പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തൻ്റെ കർത്തവ്യമായി അംഗീകരിച്ച് ന്യായപൂർവം വിധിപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും കടമയാണ്. ഒപ്പം ആ കർത്തവ്യത്തിലോ അതിൻ്റെ ബലത്തിലോ ഉള്ള വാത്സല്യവും ആസക്തിയും ആഗ്രഹവും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയുടെയും വിജയത്തിലും പരാജയത്തിലും അതിൻ്റെ ബലത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആസക്തി നേടാതെ എപ്പോഴും തുല്യനായി തുടരുകയും എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളിലും സുഖങ്ങളിലും ആസക്തി നേടാതെ യോഗയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ഇതാണ് കർമ്മയോഗത്തോടുള്ള ഭക്തി. ഈശ്വരനെ സർവശക്തനും സർവവ്യാപിയും സർവദാ എല്ലാവരുടെയും മിത്രവും എല്ലാവർക്കും പ്രചോദകനുമാണെന്ന് കരുതി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ബലങ്ങളും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് അവൻ്റെ കൽപ്പനയും പ്രചോദനയും അനുസരിച്ച് അവനെ ആരാധിച്ച് തൻ്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുക. ആ പ്രവർത്തികളിലോ അവയുടെ ബലങ്ങളിലോ വാത്സല്യമോ അടുപ്പമോ ആഗ്രഹമോ ഇല്ലാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളിലും സംതൃപ്തനായി അവൻ്റെ നാമം, ഗുണങ്ങൾ, സ്വാധീനം, രൂപം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കുക. ഇതാണ് ഭക്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കർമ്മയോഗ ഭക്തി. മേൽപ്പറഞ്ഞ കർമ്മയോഗാവസ്ഥ പ്രാപിച്ച ഒരു മനുഷ്യന് ആസക്തി, വിദ്വേഷം, കാമം, ക്രോധം മുതലായ ദോഷങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാവുകയും എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തൻ്റെ ഭഗവാനെ കാണുകയും ലോകം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ രൂപമായി കണക്കാക്കുകയും അവസാനം ഈശ്വരനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ആഗ്രഹം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।